Hi guys, welcome to Insight SSB YouTube channel. This is part 6 of CDS 1 2021 Current Affairs series. Please make sure that you also go through CDS 2 2020 Current Affairs series because certain months are overlapping and hence in every video I tell to go through CDS 2 2020 Current Affairs series as well. Talking about Insight SSB app, this will be a very helpful app for you if you're preparing for defense examination, be it your SSB or be it your written exam. So please don't forget to download us from Google Play Store. Also, if you're using any Apple device, please make sure that you download Class Plus app and use code XBVEL to make sure that you can avail all the benefits of Insight SSB on any Apple platform. We are also available on Telegram and Instagram and stay in touch with all the defense aspirants. So if you wish to build a community and be a part of Insight SSB family, make sure that you go and follow us on Instagram and also follow us on the Telegram channel. Now, moving forward with the most important thing for which you're here, that is the current affairs series. The first question is, which sites of Madhya Pradesh have been included in the list of UNESCO's World Heritage Cities? Please ध्यान देना यहाँ cities है under its Urban Landscape City program. So under this program, UNESCO will come to India next year. That is 2020 में release किया गया था. तो 2021 के अंदर UNESCO जो है अपनी टीम के साथ visit करेगा इंडिया को and they will plan a master plan. ठीक है, master plan जो है उनका that is related to development as well as conservation of the cities and the areas that are important under the city. So when we talk about Gwalior, Gwalior is quite famous. 15th century में ये develop हुआ था and when we talk about the famous kingdoms under it, सिंधिया काफी important खानदान रहा है ग्वालियर से related. ठीक है, ओरछा भी बहुत famous रहा है when it comes to various temples and palaces. और 16th century में बुंदेला किंगडम का ये कैपिटल था. ठीक है, सो राजमहल, आपके लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल, काफी सारी फेमस चीजें हैं ओरछा के अंदर. सो इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा वो है फर्स्ट एंड सेकंड जो है दीज हैव बीन डेजिग्नेटेड एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज. माउ नहीं है इसमें, सो द आंसर विल बी ए 1 and 2. When we talk about India's first World Heritage City tag, तो वो अहमदाबाद को मिला था in 2018. आप ये भी याद रखेंगे. Also, you will study about total number of UNESCO's World Heritage Sites in India and वो सब कहाँ पर present है. Coming to the next question. India ranked 10th position in Climate Change Performance Index 2021. Is it right? Yes, this is completely right. अगर हम इंडिया की बात करते हैं, in 2020 also it was in top 10th. Last year उसकी 9th रही थी position, इस साल उसकी 10th रही है और it has been out of total 58 economies. So first statement is right. Talking about the second statement that is related to Paris climate targets to implement strategies to limit global warming below 2 or even 1.5 degrees Celsius. Yes, ये बिल्कुल सही है. As you know that in 2015, there were total 196 parties or 196 countries that signed for COP21. COP21 के लिए उन्होंने sign किया था और ये जो हमारा Paris Agreement है, we entered into the force in 2016. तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था 2016 में. इस साल इसके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेरिस एग्रीमेंट पढ़ें, COP21 के बारे में पढ़ें. ठीक है, तो इसका जो मेन एजेंडा रहा है दैट इज टू लोअर डाउन ग्रीन हाउस एमिशन. ठीक है, ग्रीन हाउस एमिशन बिकॉज इट फाइनली लीड्स टू व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग, एंड उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है. हेंस Paris Agreement का जो target है that is to keep the global warming below 2 or even 1.5 degrees Celsius. This is also completely right. Talking about the third statement, recently Canada withdraws out of Paris Agreement Accord. Is it right or wrong? No, this is completely wrong. Instead of Canada, United States of America जो है उसने अपने आप को withdraw किया है Paris Agreement से. Now, talking about the fact that Joe Biden has been elected as the president, the new president, and he has taken oath on 20th of January, and hence he has announced a fact that he will again join Paris Agreement. But as of now, United States of America has withdrawn out of Paris Agreement. So talking about the statements that are right, first and second statement आपकी सही है, third गलत है, hence the answer will be A, 1 and 2. Also, I want you to comment down below that CCPI 2021 जो है
by which organization it is released. ये जो ranking है वो कौन सा organization देता है? This you will comment down. The next question is Shaheen Eagle 9 is a joint Air Force exercise between which two countries? So, when we talk about Shaheen Eagle, it was its ninth edition and it is a joint Air Force exercise between two countries, that is Pakistan and China. ये कंडक्ट की जा रही है सिंस 2011. तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज हुई थी वो हुई थी 2011 एंड इट इज बीइंग हेल्ड टू डीपन द कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज और उनकी जो कॉम्बैट स्किल्स हैं उसे इंप्रूव करने के लिए. This time it was conducted at Air Force Base at Pakistan. So the answer for the same will be C, China and Pakistan. Now, before moving further, I would like to address one of the issues and the query that I get a lot of times, and that is this series enough to score all the questions right in current affairs? So I'll just say one thing, you can easily perform 50% of your questions right in current affairs if you go through this series. But if you want 100% result that you can easily score the marks in current affairs, I'll suggest you going for the CDS 1 2021 current affairs series, because it is not humanly possible to provide every current affair in format of video lectures. Last time this series was such a hit that we got directly 2 questions from only 1 page of the PDF. So you can go and download the app, that is Insight SSB app, and finally go through all of these monthly magazines, and these will cover all the questions that are related to current affairs. I'm sure about it. Next question is Hardeep Singh Puri has launched web portal and mobile app on Good Governance Day. तो वो कौन सी ऐप है? The answer for the same is E-Sampada. E-Sampada is a web portal and mobile app which has been released on Good Governance Day. पहली बात, गुड गवर्नेंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ December. Coming to the second point, that it has been released by which ministry? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उसने रिलीज किया है इस पोर्टल को, ठीक है. एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल, तो इसका जो मेन काम है टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ताकि जितनी भी एस्टेट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सके, गवर्नेंस प्रॉपर रहे, ठीक है. जो 4 वेबसाइट और 2 मोबाइल ऐप हैं अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स, ये इंटीग्रेट कर दी गई है एज वन, विच इज योर ई संपदा नाउ, ठीक है. और इसका जो मेन काम है ताकि जितनी भी सर्विसेज है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल सके, ठीक है. So this will bring uniformity in the system across the country. The next question is, which ministry is set to launch Santusht portal for rapid grievances redressal for the employers and the employees? तो recently एक portal release किया गया है and it has been released by Ministry of Labour and Employment, और इसका जो main काम है that is कि efficient implementation हो सके लेबर लॉज की, ठीक है. जो लेबर लॉज हैं वो ग्रास रूट लेवल तक प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहे हैं और उसको प्रॉपर्ली देखना कि क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको इंप्लीमेंट करने में, अगर आ रही है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, प्रॉपर उसको चेक करना, ये काम है संतुष्ट पोर्टल का. और ये रिलीज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने. The next question is, which organization has successfully tested supersonic missile assisted release of Torpedo, which is also termed as SMART? तो SMART की abbreviation भी आ सकती है कि SMART को अगर हम abbreviated form में देखें तो what is it? So it is supersonic missile assisted release of Torpedo. और किसने रिलीज किया है? DRDO ने रिलीज किया है. ये एक लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है, तो याद रखना कौन सी है? एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है ये. एंड इट हैज बीन रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम व्हीलर आइलैंड, ठीक है. व्हीलर आइलैंड जो है ये आपके कहां पर है? दिस इज इन ओडिशा. ओके, प्लीज आप ये बात याद रखेंगे, और जो इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप इसे पढ़ सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज दैट सत्यभामा पोर्टल दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली aims to promote research and development in which sector? The answer for the same is B, mining. ये एक साइंस एंड टेक योजना है जो रिलीज की गई है फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ठीक है. माइनिंग एडवांसमेंट में हमारा जो कंट्री है वो आत्मनिर्भर हो जाए, तो उसके लिए ये रिलीज की गई है. और ये डिजाइन और इंप्लीमेंट की जा रही है बाय एनआईसी. एनआईसी जो है दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और इसका जो मेन एम है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग सेक्टर. Which of the following has achieved the status of 100% organic region after Sikkim? So after Sikkim, there is only one place which has been given a status of 100% organic region. The answer for this same is A, Lakshadweep. तो इसका जो entire
32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इस यूटी का। तो दैट हैज बीन सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक अंडर यूनियन गवर्नमेंट परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो इस योजना के अंडर इसको 100% आपका ऑर्गेनिक रीजन घोषित किया गया है और ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट के परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करते हैं तो ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो पहला कौन सा रीजन था, वो सिक्किम था, और सेकंड अब कौन सा है इंडिया में, दैट इज लक्षद्वीप। 100% ऑर्गेनिक सिर्फ यही दो हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक रीजन्स काफी सारे हैं लेकिन वो 100% ऑर्गेनिक नहीं है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि 100% ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ आपका सिक्किम और लक्षद्वीप आएगा। Talking about the content of the course, if CAT 1 2021 crash course will be the best course for you because it will cover all the 4 subjects and only the important topics that is very, very important as per exam point of view. The course has been built with immense amount of knowledge and according to previous year analysis, only the important topics will be covered and there will be doubt session after every topic is covered so that you don't remain with any kind of doubt. One-to-one interaction using groups will be present. Educators will be there to help you and to make sure that no doubt of yours go unsolved. Talking about assignment and test series, that is also involved to assess and analyze your performance. And it is very, very decently priced. So go and check this course out and I'm very sure that you'll clear the examination. The next question is, what is the name of typhoon that made landfall recently in North Korea? The answer for the same is Typhoon Bawi, and in Philippines it is known as severe tropical storm if we talk about the word Bawi, okay? And it made landfall in North Korea. North Korea में जो इसने है landfall किया है, and it further moved towards South Korea and China thereafter. ठीक है, काफी कम डैमेज रहा है. इट वॉज नॉट अ वेरी मेजर काइंड ऑफ टाइफून, ऑलमोस्ट 8th ग्रेड का जो था टाइफून था ये, तो इट वॉज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट स्टिल वी शुड नो द नेम बिकॉज आजकल साइक्लोन रिलेटेड, टाइफून रिलेटेड क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी. Also talking about the cyclone that happened in India. The first one is Cyclone Burevi and the second one is Cyclone Nicobar. और ये 10 days के gap में आए हैं in India. जो landfall किया है 10 days के within किया है. First we'll talk about Cyclone Nicobar because it has a very, very major impact. पहली बात, tropical cyclone है ये, ठीक है. Even Cyclone Burevi is a tropical cyclone. इसने काफी severe impact छोड़ा है in the places that is तमिलनाडु and आंध्र प्रदेश. इसने जो enter किया है इंडिया को through तमिलनाडु किया है and it was there in November 2020. Talking about the states that it has crossed thereafter, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड श्रीलंका, इन 4 एरियाज पे इसका इम्पैक्ट रहा है. कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, इट वाज सिवियर साइक्लोन, ठीक है. सिवियर साइक्लोन आईएमडी ने इसको घोषित किया है और कैटेगरी 1 हरिकेन के अंडर, दैट इज SSHWS की कैटेगरी रही है इसकी, ठीक है. और ये जो जनरेट हुआ था दैट वाज इन योर नॉर्थ इंडियन ओशन, ठीक है. नॉर्थ इंडियन ओशन में ये डेवलप हुआ था एंड फर्दर ये मूव किया है इसने एंड इट मूव टुवर्ड्स तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड वेरियस अदर प्लेसेस. इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछता है यूपीएससी, सो वी शुड नो कि व्हाई दी साइक्लोन्स आर इवन डेवलपिंग. तो इंडियन ओशन की अगर हम बात करते हैं, ये काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट एरिया माना जाता है. वार्मर सी टेम्परेचर जो है दैट इज कॉजिंग द साइक्लोन्स लाइक साइक्लोन निकोबार एंड अम्फान, और ये इंटेंसिफाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग टेम्परेचर इन इंडियन ओशन. एंड वील ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, दैट इंडियन ओशन जो है वो क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट है, ठीक है. टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन दैट इज साइक्लोन बुरेवी, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन नहीं था, ये वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंडर था और इसका जो लैंडफॉल हुआ था दैट वाज इन श्रीलंका. सो श्रीलंका में आफ्टर मेनी इयर्स, दैट इज आफ्टर 2014, कोई साइक्लोन जो है उसने लैंडफॉल किया है और इसका काफी ज्यादा मिनिमल इम्पैक्ट रहा है साउथ इंडिया पे. सो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन साइक्लोन निकोबार इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसे याद रखेंगे. The next question is, what is the name of new digital payment application which has been launched by IPPB, that is India Post Payments Bank, ठीक है. So the answer for the same is Dark Pay, ठीक है. Dark Pay जो है ये रिलीज किया गया है और ये नई डिजिटल ऐप है. इसका जो मेन काम है दैट इज टू मेक श्योर दैट डिजिटल बैंकिंग सर्विस इज प्रोवाइडेड थ्रू पोस्टल नेटवर्क, ठीक है.
पोस्टल नेटवर्क के थ्रू जितनी भी डिजिटल बैंकिंग सर्विस है वो प्रोवाइड की जा रही है अक्रॉस इंडिया। और इसके जो फीचर्स हैं दैट इज डीएमटी। डीएमटी इज योर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, तो ओनली इंडिया, ओके, इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं है इसके अंदर। वर्चुअल डेबिट कार्ड है, यूपीआई पेमेंट है, कोई भी बिल पेमेंट करनी है, एईपीएस है, तो ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड अंडर द सेम प्लेटफॉर्म। The next one is that which country has recently declared a climate emergency and pledged to become carbon neutral by 2025? So the answer for the same is Netherlands. So Netherlands जो है उसने emission cut जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए थे, और according to IPCC, IPCC stands for Intergovernment Panel on Climate Change, and it has predicted that it will have very adverse effects if the control of pollution is not taken care of. Hence, it has announced climate emergency. Also, this country has announced that it will get completely carbon neutral. कार्बन न्यूट्रल मतलब पब्लिक सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर स्टैंड्स फॉर योर गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज एक्सेट्रा है वो कंप्लीटली कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी बाय 2025। सो आंसर याद रखेंगे इसका क्या है, बी, नीदरलैंड्स। Next question is India's first lithium refinery is going to be set up in which state? तो कौन सा स्टेट है जिसके अंदर लिथियम रिफाइनरी जो है वो एस्टैब्लिश की जा रही है? द आंसर फॉर द सेम इज बी, गुजरात। गुजरात वो स्टेट है जिसके अंदर आपकी लिथियम रिफाइनरी, जो फर्स्ट इंडियन लिथियम रिफाइनरी है, वो सेटअप की जा रही है। The next question is which is the only Indian city to feature in world's best cities list? The answer for the same will be बी, दिल्ली। दिल्ली की जो है 62nd पोजीशन आई है। जितनी भी सिटीज इसके अंडर पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जज की गई हैं उन सब की पॉपुलेशन 1 बिलियन से ऊपर है, तो सिर्फ वही सिटीज जिनकी 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है दे हैव बीन रजिस्टर्ड एंड चेक्ड। तो इंडिया की 62nd पोजीशन आई है। अगर फर्स्ट 3 सिटीज की बात करते हैं तो फर्स्ट हैज बीन लंदन, सेकेंड हैज बीन न्यूयॉर्क एंड द थर्ड वन हैज बीन पेरिस। ठीक है, ये 3 सिटीज ने टॉप किया है, और ये जो रिपोर्ट है वो कनाडा बेस्ड रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड जो है वो इसे देता है। Now the next question is that who will host 2030 Asian Games as per the announcement made by Olympic Council of Asia? So the answer for the same is Doha, Qatar. Now when we talk about these 3 options, Hangzhou, China will be hosting it in 2022, and this will be the 19th Asian Games. Talking about Jakarta, Indonesia, this has been the host for the maximum number of times till date. Okay, अगर पूछा जाए that who has hosted Asian Games for the maximum number of time, the answer for the same will be Jakarta, Indonesia. And when we talk about Nagoya, Japan, so Nagoya, Japan, this will be hosting it in 2026. Fine. So please remember these additional information that I've given, and also I answered in the last video that the mascot for the same has been released, and the answer for the same was Fifi. तो मैं एक बार दोबारा repeat कर देती हूँ. Please remember this as well. Now I just want to give you certain important information. तो इंडिजिनस गेम्स इंक्लूड किए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। तो दिस इज टू प्रोपोगेट द इंडिजिनस गेम्स। इंडिजिनस गेम्स का क्या मतलब होता है? द गेम्स जो कि इंडिया में डेवलप हुए हैं। आज तक हम जितने भी स्पोर्ट्स खेलते हुए आ रहे हैं दैट इज ऑल फ्रॉम अदर नेशंस, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, ठीक है। सो हमारे खुद के देश के भी कुछ गेम्स हैं, उनको प्रोपोगेट करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में certain games include किए गए हैं, and the name for the same are these: Gatka, that is from Punjab; Kalari Payatu, that is from Kerala; Thangta is from Manipur; and Malkhamba is from Maharashtra. खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी एनडीए में भी क्वेश्चन आया है इसके रिगार्डिंग, सीएपीएफ में भी क्वेश्चन आया है, और आपका जो सीडीएस का एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि जो आपके 2021 गेम्स हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं, वेयर इट इज गोइंग टू बी हेल्ड। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑल्सो गिविंग यू वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज किया है योगासना को एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो ये किस चीज में उसे एनेबल करेगा? इट विल एनेबल इट इन गवर्नमेंट फंडिंग। अगर गवर्नमेंट फंडिंग मिलेगी तो इसको जो प्रोपोगेट करना है इन द कंट्री इट इज मच मोर इजियर। तो अब आप ये भी याद रखें योगासना भी इंक्लूड कर दिया गया है एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। नाउ कमिंग टू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर IK गुजराल, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट दैट इज N वेंकैया नायडू, उन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है एक पोस्टेज स्टैम्प इन ऑनर ऑफ हिम। तो दिस इज IK गुजराल, इनके लिए ये पोस्टल स्टैम्प जो है इनके ऑनर में रिलीज की गई है।
आईके गुजराल से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आईके गुजराल की बात करते हैं, ये हमारे 12th प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1997 टू मार्च 1998। ऑफ कोर्स इनका टर्म काफी कम रहा था और बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस पॉइंट एंड टाइम के अराउंड जब बहुत छोटे छोटे टर्म्स में उनकी जो सरकार है वो गिर जाती थी। ठीक है, तो थर्ड इंफॉर्मेशन जो हम याद रखेंगे इनके बारे में, दैट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एज एन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ही वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल और इनके आज तक 5 प्रिंसिपल्स जो इन्होंने दिए थे उनको बहुत ज्यादा माना जाता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो गुजराल डॉक्ट्रीन करके थे, दैट वाज रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन विद इंडियाज इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने आखिरी में डाली है ताकि जो भी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करता है उसको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड विद दिस आई विल एंड द 6th पार्ट ऑफ द सीरियस करंट अफेयर सीरीज। मैं आपके लिए और काफी इंपॉर्टेंट सीरीज जो है अब लेके आऊंगी, रेगुलर वीडियोस आएंगे अब आपकी सीडीएस से रिलेटेड। ऑल्सो लेटिंग यू नो वन मोर थिंग, दैट दिस इज द टाइम, जिसने भी पहले पढ़ाई कर रखी है लेकिन आज की डेट में जो रिविजन नहीं कर रहा है, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू क्लियर द सीडीएस एग्जामिनेशन। एंड जिसने पहले मेहनत कर रखी है और आज की डेट में रिविजन करेगा, that person will easily qualify the examination, that too with flying colors and very very good marks. Okay, so बस एक चीज पे ध्यान रखना है, इस टाइम पे कुछ भी नया नहीं उठाना है। जो करंट अफेयर्स दैट आई एम गिविंग यू, प्लीज उनको रेगुलरली कर लो, लेकिन जो स्टैटिक पार्ट है जितना आपने पढ़ लिया है उसे बार बार रिवाइज करें। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट 2-3 टाइम्स सो दैट वट एवर यू नो इट परफेक्टली, वो क्वेश्चन आप सही तरीके से करके आए। ठीक है, and I'm very very sure that my students will make it to the list inside SSB family, will prove out to be one of the winners when it comes to the examination. All the very best guys, I have a lot of trust in you. Please make sure that you make us proud.